साथ रोहतक नर्सिंग होम से फेमस डॉक्टर अनिला नागपाल हैं एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट बेबी ब्लूम से डॉक्टर पूजल गुलाटी हैं। सो आज हमारा कुछ जनरल क्वेश्चंस हैं मैम आपसे, जो कि लोगों को प्रॉब्लम हो रही है और फेस कर रहे हैं करेंट सिनेरियो में। तो उनका पहला क्वेश्चन तो ये रहा है कि आईवीएफ में स्पेशल केयर की ज़रूरत पड़ती है? आईवीएफ में पोस्ट प्रेगनेंसी अगर आप पूछ रहे हैं तो स्पेशल केयर नहीं पड़ती, बट इनिशियल डेज येस वी टेल द पेशेंट टू टेक सर्टन प्रिकॉशंस, टू टेक रेस्ट बिकॉज वी आर ऑल्सो इमोशनली इक्वली इन्वेस्टेड इन द प्रेगनेंसी, but as in it's like a normal pregnancy, but I think unless until it is associated with some disease like diabetes or hypertension or any other disease for the patient, then again you have to take care for that also. So I would like to conclude by saying that if you're asking me कि IVF में if a patient is pregnant because of IVF, no, she does not need any special or extra care. We asked her to take normal precautions like in normal pregnancy, not to pick up heavy weight, etc. But if there is a additive disease like diabetes, hypertension, like Dr. Anila ma'am said, then of course, like in any other pregnancy, whatever care we have to take, we have to add to it. It is like a normal pregnancy. It is like a normal pregnancy. Okay. So बहुत सारे myths ये भी होते हैं कि अगर किसी ने IVF के थ्रू कंसीव किया है, he or she should quit the job because of IVF procedure that is taking place. Well, that is not at all true. The day we do the pickup, yes, we do ask the patient to take rest on that particular day. But if there is no complication as such, then there is no need of extra leave, or the patient definitely does not have to change her lifestyle or her job scheduling. It's just like any other normal pregnancy. It is just like any other normal. So girls can go on their jobs also if they are conceiving through IVF? Yes, definitely. We encourage them to decrease their anxiety levels, not to change their, we ask them to improve their lifestyle, but we do not ask them to leave their job. Daily routine, they don't have to change their daily routine. एक आजकल नॉर्मल सा कंसेप्शन लोगों का बन गया है कि IVF फेलियर्स ज़्यादा बढ़ गए हैं. So what is the reason behind, and can that be cured again? Well, I would like to put it this way, that IVF failures have not increased, IVF attempts have increased. And of course, every case is different. I would not like to comment on that on numbers, but a good center definitely gives 40 to 50% of success, which adds on, the success goes on adding if we, take special precautions like doing frozen embryo transfer and all those things. This is a case-to-case question, but this IVF failure as such has not increased. In fact, it has decreased. Previously, it was about 30% success rate. Now it has increased to 40-50%. Yes. Or more than that. And more than that, in our center, we are seeing 65 to 70% success rate, which is pretty good, I must say. There's one more question, ma'am. See, second time हम IVF के लिए, जैसे first time failure हुआ, हम second time फिर से IVF के लिए जा सकते हैं? हाँ, definitely. Why not? Okay. Patient should not lose their heart. One-time failure is definitely not an answer to their destiny of being parents. So patient should take a second attempt. We should counsel the patient beforehand. There are chances of failure, but it does not define you and does not end your treatment. We are specialists in managing failed cases. So we have a lot of patients who have had multiple IVF failures but have become proud parents of twins and children in the first attempt with us also. That's nice. मैम, दूसरा एक बहुत प्रेवलेंट सा क्वेश्चन है, मिसकैरेजेस बहुत बार होते हैं लोगों के, तो इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? उसका कारण ढूंढना चाहिए, कारण क्या है मिसकैरेजेस का, and then treat that. And can a person who's having a regular miscarriage can go for IVF? Yes, of course. Why not? We have to treat the cause of the miscarriage, as Dr. Anila said, and the patient after pregnancy should be in very experienced hands, because the every pregnancy is precious, but because the IVF pregnancy is so awaited and so financially invested, emotionally also, the doctors are equally invested. I think the greater advantage that we have here is that we are having a complete IVF setup. With that, we have a senior gynecologist to take over when the patient is pregnant in Rohtak. So everything is under one roof, I must say. Ma'am,
there's one more thing. How would you define an IVF failure? What is that? Well, there are two definitions to a failure. First is when you accept a failure and when you call it a failure in a medical language. So मैं ये बोलना चाहूँगी कोई भी पेशेंट कभी भी फेल नहीं होता है IVF में. Maybe you get delayed. देर आर केसेस जहाँ पे मे बी पेशेंट खुद को फेलियर समझता है कि भैया मैंने एक ही बार ट्रांसफ़र ले लिया और जी वो मेरा नेगेटिव हो गया तो मैं IVF में फेल हो गई. ये कई बार मेरे से पेशेंट्स बोलते हैं, बट दैट इज़ नॉट द राइट टर्मिनोलॉजी. अ डॉक्टर हैज़ टू टेल द पेशेंट कि फेलियर, अगर आपको पहली ट्रांसफर में प्रेगनेंसी नहीं हुई, इट इज़ नॉट अ फेलियर. मेडिकल साइंस तो कहती है कि जब तक आप 3 बहुत अच्छे ट्रांसफ़र नहीं लेते हो तब उसके बाद आप खुद को फेलियर कहते हैं. मैं IVF साइकिल की बात नहीं कर रही, मैं ट्रांसफ़र की बात कर रही हूँ कि जब हम एक्चुअली एम्ब्रियो आपकी कोख में डालते हैं उसके बाद 3 बार नहीं लगे तो. बट इसके साथ बहुत सारे बाकी चीज़ें अटैच्ड होती हैं. आपकी एम्ब्रियो क्वालिटी क्या है, अंडकोश की हालत कैसी है, अंडे की क्वालिटी क्या है, स्पर्म की क्वालिटी क्या है. सो जो आप पूछ रहे हैं कि IVF फेलियर हम किसको कहते हैं, IVF फेलियर एक तो मन को कहते हैं जो पेशेंट को हो जाता है, और दूसरी चीज़ एंड वी एज अ डॉक्टर इट्स अ फेलियर फॉर द डॉक्टर कि हमें पेशेंट को समझा के रखना है कि IVF फेलियर इज़ just a part of the treatment and people get success in the first cycle itself. Sometimes जिनको 2 फेलियर के बाद प्रेगनेंसी होती है वो अपने फेलियर्स को भूल भी जाते हैं. So that is not a failure. I mean failure is medically defined कि आपने 3 बार ट्रांसफ़र लिए जी और आपको प्रेगनेंसी नहीं हुई, but that does not define your treatment failure. 4th ट्रांसफ़र में भी आपको प्रेगनेंसी हो सकती है. So that is on the patient to define her or treatment's failure itself. और अंत में मैं ये कहना चाहूँगी किसी भी वजह से अगर कोई भी कपल ऐसा है जिसको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो दे कैन कॉन्टेक्ट अस एट रोहतक नर्सिंग होम.